हाय गाइस, मेरा नाम है सानुज सानुज सूद। आज आप सबके सामने कुछ पोइट्रीज पेश करने जा रहा हूँ और उम्मीद है कि आप सबकी होठों पे मुस्कान भी आए। तो प्यार तो सबको होता है, ये प्यार का कीड़ा मुझे भी काट चुका है। तो एक लड़की के साथ क्या चल रहा है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, पर अगर वो लड़की इसको देखेगी तो वो उसके लिए है ये पोइट्री, बिकॉज आई रियली लव हर। टू द वन फॉर मी, to the one for me, you're my ecstasy. Far fetched fantasy, a manifestation, reality. Barriers and distance, separate contingents. A lover boy, a Sigma man. Fool's paradise, the feeling of love. Drowning in delusions, hallucinating confusions. The immortal singer, a graceful dance. The divine smile, the lips worthwhile. A beautiful woman, a powerful girl. Actress amazes, lover she dazes. I sit on my throne, thinking of realities. Blocked from the sun, my moon sadly perishes. A queen of Mumbai, ek londa Dilli da. एक बारी आ मेरी प्यारी महबूबा. A reunion I wish, pray and seek. A marriage proposal I daringly speak. Would you be mine? I'll shine the stars. Would you be mine? I'll rule over the Mars forever. Thank you. ये तो एक थी, दो और बाकी हैं। अब ये जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे आई होप ये जवानी है दीवानी सबने देखी है। तो मैंने एक पोइट्री लिखी है बनी एंड नैना। ये मेरे अंदर के दो कैरेक्टर्स हैं, मैंने रिलेट किया है पूरी मूवी को अपनी ज़िंदगी से। तो ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं मेरी ज़िंदगी में। तो मैं शुरू करता हूँ अब, और ये ऐसी जाती है। बनी एंड नैना, a YJHD convo. Personality from Nana to Bunny flashes, a medicine to media student. My life being the Manali trip, I question my senses, a reality grip. The stillness in me rises, it's a Bunny to Nana crisis. Nana matures, Bunny grows. Chaotic chaos within me, priceless. The Nana within me, drugged up menace, मैं drugs नहीं करता. The devil around me pounces to attack me and annihilate me. The bunny in me arises to protect what's left of my life. Two personalities clash to suppress me, to quieten me. Vikram, the boyfriend, thrashes. I made a plunge, a runaway trip. Till date, I think though, if Bunny stayed with Avi, would the madness have subsided? A 3 a.m. poem, I sit wide awake, pondering the question to self. Quest to find the lost bunny within, the world around mesmerizes. अब ध्यान से सुनिएगा. For when the puppet becomes a lion, society cannot tolerate. They want to quieten the bunny within, the nana within, lifeless. As both characters talk within me, a dialogue within commemorates. खुद पे दया करना बंद करो और खुद से प्यार करना सीखो. और मैंने सीख लिया. शुक्रिया. अब एक आखिरी पोएम सबके लिए, ये सबको खुश करेगी. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, विराट कोहली की इतनी अच्छी पारी खेले थे वो पाकिस्तान के खिलाफ, 82 और 53 बॉल्स एट मेलबर्न ग्राउंड. Oh man, that drove me crazy. मैंने इसके ऊपर एक पोइट्री लिखी है. So all of you relive the Diwali miracle of 2022. So here it goes. India versus Pakistan. High intensity clash it was. What a cricket match it was. The men in blue seeked redemption. The men in green evoked apprehension. Babar and Rizwan fell cheaply. Death overs still hurt us deeply. Then came the fire of their pace battery. 4 wickets down seemed like a mockery. No chance to win, faces to hide. The injured lion still had his pride. Out of nowhere, a counter-attack. Clueless opposition were taken aback. Mr. Kohli playing the innings of his life.
bravery shown in times of struggle and strife. Two shots of Harris, of divine touch, brought their arch rivals to a single crutch. Last over drama, Hardik out first ball. With few ifs and buts, Ashwin stood tall. The fans roared, celebrations began. Even a hater turned the king's fan. For he made Diwali a lot more bright. In times of adversity, he put up a fight. Winning was a satisfactory feeling. The match evoked emotions, had a lot of meaning. अब आखिरी दो लाइनें आप सबको दुखी करने के लिए. In the end, a match to remember. Come on, boys, bring the cup home in November. जो नवंबर में तब भी हारे, अब भी हारे. शुक्रिया. Thank you so much, everyone.